नुसरत भरूचा इन दिनों अपनी फिल्म जनहित में जारी को लेकर सुर्खियों में है। आज यह फिल्म रिलीज हो चुकी है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। अब देखते हैं कि थिएटर में फिल्म देखने पहुंची ऑडियंस का क्या कहना है। Very nice. It has a very strong social message. So I liked the direction also. जय बसंत सिंह को बधाई हो कि इतना अच्छा सोशल मैसेज उन्होंने कन्वे किया एक मूवी के थ्रू। अच्छा है कि इसमें एक मैसेज है सर। लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी हिपोक्रेट है, आपको लगता है ये जो सब्जेक्ट है एक्सेप्ट करेगी? नहीं, इसलिए एक्सेप्ट करेगी ना कि फिल्म में एकदम नीट एंड क्लीन बनाया है, वल्गर है भी नहीं। इतना बोल्ड मैटर होने के बाद ये फिल्म इतनी साफ़ सुथरी बनाई है ना कि पूरी फिल्म के साथ इसको मतलब फैमिली के साथ देख सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। जो मैसेज उन्होंने दिया है वो रियली बहुत ही अच्छा था। मतलब कि स्ट्रॉन्ग इसकी जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो कंडोम के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं लेकिन कुछ ज़्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन इसमें कुछ अलग स्टोरी दिखाई गई है। नुसरत भरूचा की बात करें तो यार मतलब कि उनका करियर का मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस था। बंदी ने क्या काम किया, सुपर। कहना चाहूँगा मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छी मैसेज है। लोग कुछ भी कहे, मेरे हिसाब से बॉन्ग अंकल जो कहता है, मैंने जो देखा मुझे मेरी आंखें खुल गई। क्यों, मुझे भी ऐसा लगता था कॉन्डम इज़ ओनली अबाउट प्लेजर। नो, इट इज़ नॉट अबाउट प्लेजर, इट इज़ अबाउट प्रोटेक्शन। सर टॉयलेट बनी, पैडमैन बनी, हाँ, सो ये सारी ऐसी मूवी आनी चाहिए। आई नो ये सारी पिक्चर थिएटर में नहीं हिट होती है, OTT में चलती है, बट वट एवर इट इज़, गट्स लगता है ऐसी फिल्म बनाने के लिए। अब देखते हैं कि दर्शकों ने फिल्म को कितने स्टार दिए हैं। I'll give 3.5. 5 में 5 सर। 5 3.5 स्टार दूंगा मैं इसमें। मैं जनहित में जारी मूवी को 5 में से 5 देना चाहूँगा, और ख़ास करके पराग मेहता जी जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, निर्देशक जो हैं, निर्माता हैं, उनको मैं धन्यवाद शुक्रगुजार करना चाहूँगा। जनहित में जारी में नुसरत भरूचा कॉन्डोम बेचने वाली लड़की की भूमिका नजर आ रही हैं। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जनहित में जारी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत अक्सर अपने बोल्ड अवतार को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में राखी नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी देखने पहुंची। राखी यहां अकेली नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद थी और पिंक आउटफिट में काफी खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद राखी का कहना था, जनहित में जारी तो आज हम प्रीमियर देखने आए हैं। बहुत अच्छा मैसेज है। नुसरत भरूचा ने बहुत अच्छा काम किया है। स्पेशली प्रिकॉशन और कॉन्डम के ऊपर फिल्म है एंड वेरी एक्साइटेड टू सी दिस फिल्म। देखिए, कॉज के लिए फिल्म है, कॉज के लिए जागरूक करना ज़रूरी है। सरकार इतने सालों से कॉन्डम की ऐड कर रहे हैं, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि ये फिल्म में ये दिखाया गया है कॉज के लिए। इसके बाद राखी बोली, प्रिकॉशन यूज़ करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम दो हमारे दो, इतनी महंगाई में, इतने टेंशन में, तो इसीलिए लाइक हम दो हमारे 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होना चाहिए पुराने ज़मानों की तरह। मेरे ख्याल से अभी प्रिकॉशन कॉन्डम है, इसीलिए आबादी थोड़ी कम होनी चाहिए। पुराने ज़माने में ये कॉन्डम क्यों नहीं बने? और सिर्फ नॉट फॉर किड्स और आबादी, इट्स फॉर सेफ्टी। HIV बहुत ज़्यादा फैल रहा है, लोगों को अभी तक पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे, मुझे अभी बीच में एक HIV लड़का मिला था, कह रहा था कि मुझे HIV हो गया है और मुझे घर से बीवी बच्चों ने सब ने निकाल दिया, बिरादरी से कोई नहीं छूता मुझे, कोई मुझे छूता नहीं है। सो आई टोल्ड हिम, व्हाई डोंट यू यूज़ प्रिकॉशन? वो कहता वो क्या होता है? मैंने कहा कॉन्डम क्यों नहीं यूज़ किया? फिर वो शर्मा गया, चला गया। देखो, ये सिर्फ सब लोग जो है, इसमें शर्माने की बात क्या है? मैं एक लड़की होकर, नुसरत भरूचा एक लड़की होकर जब ऐसे फिल्म बना सकते हैं, ये मैसेज है लोगों के लिए। और लोग कहते हैं, मुझे एक बात कहने के लिए बहुत शर्म आती है, उनको जाके मेडिकल में कॉन्डम ख़रीदना शर्म आता है, लेकिन वो बीमारी ले लेंगे कुछ लोग, लेकिन जाके ख़रीदेंगे नहीं। हाँ, शराब के लिए बोलो, एक टांग पे खड़े होकर चले जाएंगे शराब खरीदने, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी भी वक्त है,
हमें प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए, है ना। जनहित में जारी में नुसरत कॉन्डोम बेचने वाली लड़की की भूमिका में नजर आएंगी। जनहित में जारी 10 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नुसरत भरूचा के फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री महिमा चौधरी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। इस वीडियो को शेयर करते हुए अनुपम महिमा को एक हिम्मती महिमा बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने एक फिल्म में एक्टिंग के लिए महिमा को कॉल किया तब उन्हें पता चला कि महिमा ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। वीडियो में महिमा अपनी बीमारी के बारे में बता रही हैं। इस वीडियो में महिमा को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। What are you thinking? I don't know. Just trying to concentrate on the camera and see that he gets my focus. After how long are you doing this photo shoot? Oh, photo shoot I do at home, but I do it with my hair that I've bought, which I think is my hair. So what happened? Tell me the story of I called you up for this role in film Signature. It's uncanny. You called me at a time when I'm just getting my infusion and the nurses are standing on me, and I know you're in the USA. So when I see it go Anupam Kher USA number, I was like, he's calling me because it's urgent. You know, because we don't call and chat, hey, what's happening there? Yeah. So I said, let me answer this. So I take it, and you start saying that, you know, I want you to do a film. And I say, you know, I would love to do, but can you wait? And you said, no, I can't wait. Why do you want me to wait? And why is there so much noise in your house? And I said, I couldn't lie because all the nurses were around me. So I said, I'm not at home. Where are you? So I'm like, I'm That's in the hospital. That's not the way I talk. You're talk. Huh? I was nice to you. So, no, surprisingly, ever since I lost my hair, I was getting a lot of calls for, you know, like web series and this and that. And I was like, God, why am I getting calls now when I don't even have hair? So I didn't tell them. Okay, so you. But with you, I just can't like not tell you that I don't want to do your film. So I said, okay, and you started rattling off the role, and he's like, this is, and you like this, and you like this, and then you have to pay this. And I was like, okay, are you going to do it? And I was like, yeah, but are you going to do it? So I was like, okay, but I need to talk to you. So then I spoke to you in the night, and I told you that, is it okay if I come to the sets with a wig? And you said, why would you come with a wig? And I said that I've lost my hair, I've just gone through treatment. I don't know, it just gets emotional. That's okay. I think you're the most courageous person. I just want to thank you for being okay with it, because I thought I should tell you that I'll be wearing a wig, and then you said, why even a wig? Why can't you just do the film just as the way you are? And I said, I don't know if I have the courage. And you said, I think you do. So I just think it's so nice. When did you discover that you have breast cancer? No, my breast cancer, I didn't have any symptoms. I do like a yearly test for myself where I do my sonography and blood tests. You know, the yearly checkups, it was an annual checkup where my person who was doing my sonography said, I think you should go and get this checked with Dr. Mandar, who's an oncologist. And I know about him. So the minute I heard that, luckily I had a friend with me. I never take anyone with me when I do all these yearly checkups. And so I went and met Dr. Mandar, and he said, we'll do a biopsy, but it doesn't look anything. These are cells which are pre-cancer cells. It's called DCIS. And sometimes they become cancer, sometimes they don't become cancer. So it's up to you. Do you want to remove them? And I said, no. I'm like, take it out. So we did a biopsy, and it didn't come cancer. It was negative. But I still wanted to take it out. So when we took it out and they did a biopsy of the entire cells that were removed and tissues, they found tiny cells, like a tiny portion of cells that had already become cancer. And so he said that when you were in this surgery, we put a port. So I still have the port here, you know, this raised bit, and then you have these veins which are going in.
So they said, we have to give you chemo. And then I started crying. And then my sister was like, it's treatable. Doctors saying it's 100% treatable. You know, these are very, very early cancers. And that's the one thing that, you know, if you catch it early, cancer is treatable. And my sister was like, why are you behaving like a 17th century woman? Why are you crying? I mean, the doctor's like, good news. And you're crying. Well, I think we're just so terrified of the word cancer, which is why I didn't share it with my parents, because they're so vulnerable. They're like, I live with them and they're like, especially my mother's like, she's very vulnerable last 2 years. She's been with nurses. So I just went and told her, Mommy, I have a lump in my breast. So I had it removed. That's why I didn't see you for 10 days. And her blood pressure just went up and down, and she was passing out, and then by the evening we had to take her to the hospital. So what do you feel now? You shot for 2 days for the film. I feel so good. Yeah. So what do you want to tell women who discover suddenly? Because I think I learned from the women. I learned from a lot of women who were coming to chemo, and they were like, oh, I'm going to work straight from here. And I was like, really? Why do you have to work? Doesn't your company give you an off during time? They said, no, they gave us off. It's completely paid for and all. But I don't like to sit at home. I like to work when I'm doing this. It just makes me feel normal. And I was like not the very brave one. I was like, everyone in my family was brave, like my friends and my sister and my brother. And I was like all the time weeping and crying till I met a little boy. I heard his voice. And he gave me strength, and I just looked at him, and during my half chemo, I went just to make conversation with him, and I said, "अरे आपकी दवाई बस इतनी है, मेरी तो इतनी सारी है, इसी से तो ठीक होते हैं." He said that. He was also getting treated for it. इसी से तो ठीक होते हैं. तो I said, हाँ, लेकिन फिर ना मैं like बहुत दिन तक ऐसे ही लेटी रहती हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ होती है. तो he says, मैं 5 दिन लेटता हूँ बस, उसके बाद तो मैं खेलता हूँ, उसके बाद तो like I'm fine, I'm back to myself. So I was like, wow. So Shalam, what I want to tell you is that you are my hero. So she is my hero, and she's fantastic. She's the best thing. He actually said, beautiful. When I said, I don't know if I'll suit, being on the sets like this, he says, we don't have real life heroes, and that's what we're looking for. And you are one of them. So thank you. He's been so supportive. Oh my God. Thank you so much. Much. All those people who are listening to this Mahima Chaudhary, she is the best thing. And she's superb. You need more people like this, because no matter how many people you have holding your hand, it's not enough during times like this. So, I am so grateful to him. So all for of you out. people now have to pray. She's fine by the way. Yeah, I'm fine. I'm totally recovered. Yes. So, and I'm doing well. Thank you. Lots of love. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Cut. फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। महिमा की शादीशुदा जिंदगी भी कम उतार चढ़ाव वाली नहीं रही। 2006 में बॉबी मुखर्जी से शादी करने वाली महिमा ने 2013 में ही तलाक ले लिया। फिलहाल महिमा अपनी बेटी के साथ रहती हैं। Well, I can never miss an update.